My question is, to what extent should we limit our detachment? But this word attachment and detachment, I think sometimes we take everything too literally. You know, uh, yes, we should slowly, as we go through life, as we experience life, we come to that level of maturity where we start understanding what everything means in our life. So it has to be a gradual process. It is not that you heard us a song today and somebody said you should be detached and you say, okay, from today on I'm going to be detached. It doesn't work like that, beta. Now, should I love my children? Yes. Should we love our parents? Yes. Should we love our brothers and sisters? Yes. But when you go to the extreme, that becomes negative. Okay. Now keep a balance in your life. And whatever relationship or whatever work, unless you don't do it well, you will never be successful. But when you go to extremes, then reactions take place. So the idea is not to go to extreme. And that's what, as human beings, we do. It's your attitude. If you have the right positive attitude, that's what's going to give you true happiness. So that balance beta. Okay. Raswami Babaji. Babaji, can you please advise me how can we motivate ourselves every day when we find ourselves sinking more and more into worldly problems, family Beta, responsibilities? how do you motivate yourself to work so hard throughout the day? Because if you don't work hard, nobody is going to give you your salary and keep you in that job. So it is a self propelled need which makes you work hard. And similarly, out here, we need that anchor in our life because without that anchor, the ship will sink. So it's not a question of how do I motivate myself. I have to motivate myself to fulfill this task, otherwise, I'm lost. Raswami Babaji. Babaji, my question is, in the world that we live in now, everything has a result and a consequence quite quickly. Like there's an instant gratification about everything, and subconsciously, it's inbred in the mind that there should be a quick result for all the actions that we perform. So, If there is a quick result for the actions you perform, you forget spirituality. so that Because most of your actions have been such. If we are here, it is because of our karmas. So, which means the majority of our actions have been negative. So, if you get quick results, instant karma, then you forget that you'll ever get salvation. yeah. So that was actually my question. Actually, so we expect instant gratification, not the So, result. so be happy for delayed reaction. Yeah. Thank you. My question is, I have always wished to speak about spiritual topics. I have also applied as an English satsang and my selection is under process. But I sometimes feel that I am unworthy of it. Should I pursue it? Beta, who's worthy? The question is, if we were worthy, we won't be here. If we are here in this creation, it is because of the karmic load. So we are all, the idea of satsang is basically we are trying to be supportive of each other. We don't have a priestly class. So it is not that somebody is an elevated soul and that's why he is delivering satsangs. It's basically somebody knows that subject and he talks about that to be supportive to each other, to remind each other of what is the reality of life. And we should always keep that in mind whenever we are doing anything. Basically, beta, when somebody gives satsangs, he's actually giving it more to himself rather than to anybody else. He's just using, everybody else as a platform. So we are just reminding ourselves that this is what I need to do, this is what I should become. Babaji, currently I am a teacher by profession,
The things I observe every day and it concerns me the most is how distracted our upcoming generation is. They have early access to everything, the information, resources, and I talk about our generation as well. They are somehow feeling lost. They are too ambitious. They are battling. They are trying to achieve things, jobs, family, spirituality. Babaji, can you tell me that how every day, few steps or few most essential things that our generation should follow to feel more connected to you, as we are not initiated, we are the youngsters. And what about the youngest generation, like 4 year olds, those who are going to school? I observe them every day. They are lost. How we can help them also? Babaji, can you try? Beta, we've gone wrong in our education system because we are trying to fill them with knowledge. Now, what is their grasp is different from each other. In good old days, in the Guru Shish Parampara system, it was more practical training rather than knowledge. So, somewhere that thirst for knowledge, getting to know more, knowing more. So, knowledge it by itself doesn't mean understanding. Knowledge helps you to grasp something and then it has to be put into practice. And it's only the practice which will help you to know the difference between illusion and the truth. We are just conceptualizing. We are not putting it into practice. So unless the practice is not there, now from the first class you start teaching the child. In good old days, it used to be just, playing with blocks or doing something together, going into the garden, planting trees or doing all this sort of a thing. So there was a practical aspect to that. More knowledge means more confusion, doesn't mean more understanding. That knowledge has to be applied, it has to be put into practice. And that practice will give you understanding. So we have to learn to keep a balance with the practical aspect rather than just, reading scriptures and gathering all this knowledge and thinking that we know everything. बाबा जी हमने बड़ों से काफी बार सुना है कि तेरा भाना मीठा लागे, लेकिन हमेशा वो भाना मीठा नहीं लगता, उसको एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नहीं, आपकी बात ठीक है कि जब हमारी मनमर्जी के साथ कोई चीज ना हो तो थोड़ा सा गिला शिकवा तो होता ही है, मगर बेटा बात तो वही आ जाती है कि हम मालिक से बेहतर जानते हैं। वो जो सृष्टि का मालिक है वो सही जानता है बेटा, और वो वही देगा जो हमारे हित में होगा। हमारा दायरा छोटा है, हमें तो मालूम ही नहीं कि आप जिंदगी में जैसे अनुभव होगा आप देखेंगी जो चीज़ें हमने सही सोच के मांगी थी वो आगे जाके दुख देना शुरू कर देती हैं। सो इसलिए बेहतर यही है कि बेटा उसके हुक्म में रहें, वो बेहतर जानता है। थैंक यू बाबा जी। बाबा जी, जो नामदान लेने के बाद भी नशीले पदार्थ जैसे सेवन करते हैं, तो उनके भी कर्म बनते हैं? ज्यादा बनेंगे बेटा। जो जिसने नहीं लिया वो तो चलो फिर भी कह सकता है कि मेरे को मालूम नहीं था। जो सोच समझ के करता है तो उसका तो बोझ ज्यादा बनेगा ना। बाबा जी, मुर्शिद से दूरी रूह को बीमार कर देती है। रूहानियत में मन लगता है लेकिन दुनियावी कामों में मन नहीं लगता, तो उसको कैसे तो निभाएं? अच्छी बात है बेटा, सारी दुनिया तो मन के साथ उलझ रही है। कहते हैं कि भजन बंदगी नहीं होती, परमार्थ के साथ मन नहीं लगता। जिसको दिया है वो कहता है कि जी दुनिया में मन नहीं, तो अच्छी बात है। तो फिर दुनियावी कामों को भी निभाना होता है ना, आप कहते हो जैसे बैलेंस रखना चाहिए। अगर रूहानियत के रास्ते पे चलेंगे, विश्वास होगा, दुनियावी काम मालिक अपने आप करवा देगा। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਬਣੋ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਹਾਂ।
ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਸਿੱਖੂਗਾ ਬੇਟਾ? ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖੂਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟਾ। ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਉਂਗਲੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੋ। बाबा जी, जब हम माता पिता या दादा दादी की सेवा करते हैं और जैसे पैर दबाते हैं, तो ऐसा करने से हमारे कर्म कट जाते हैं और उनके बढ़ जाते हैं क्या? नहीं बेटा, ये तो अच्छी बात है, सेवा करनी चाहिए माँ बाप की, दादा दादी, नाना नानी की, मगर इसको गिनती में नहीं लाना चाहिए बेटा। ना उनके कर्म कटते हैं, ना आपके कटते हैं। सो ऐसे नहीं सोचना चाहिए। ये तो सेवा भावना के साथ हम कर रहे हैं। I wanted to ask कि what is the key to happy marriage? Like I have seen many a times that partners are happily married but get tempted towards wrong things. So what should a partner should do? Respect each other. Have a healthy respect. Marriage should be better a 50-50 relationship. You know? So, Babaji, if we come to know about the temptation, so shall we talk freely to each other? Or Yes, we should talk freely with each other. Basically, to leave anything better, you need some support and strength. So, if the other person feels the relationship is strong and it is worth fighting for, he will automatically apply himself. But if you sort of neglect him or just start pointing fingers, then he will just react. okay. ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ, ਬੁੱਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ, ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਆ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਮਤਲਬ ਸਭ ਆਪਣਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਈਗੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਤਰਫ ਉਂਗਲੀਆਂ ਉਠਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਾਵ ਕਰਨ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਟਾ ਪਰਖ ਕਰ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਮਾਲਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੈ। बाबा जी, हमारी एज में हम सब अकेला फील करते हैं और आगे की एज में भी फील करते हैं अकेला, लेकिन हमारी एज में ऐसा क्यों होता है कि हमें किसी एक खास की तलाश होती है और उस तलाश के चक्कर में कभी कभी हम कुछ गलत लोगों से मिल बैठते हैं और कुछ गलत कदम उठा बैठते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? नहीं बेटा, देखो दुनिया की असलियत तो ये है कि अकेले आए हैं और अकेले जाना है। ये हमारा भरम है कि इतने रिश्तेदार हैं, यार दोस्त हैं, मगर असलियत यही है। सो हमने अपने आप को किसी के ऊपर निर्भर नहीं बनाना, खुद मुख्तियार होना है। सो बेटा ये भी एक मुकाम है जिससे हमने आगे बढ़ना है, और आहिस्ता आहिस्ता उम्र का तकाजा है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अपने आप जिंदगी का एहसास हो जाएगा। बाबा जी, जो रूहें बचपन से आपके सत्संग घर में अपने सेवा करते हैं, बट बड़े होकर उनकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वो सेवा चाहकर भी नहीं कर सकते, वो अपने मन को कैसे समझाएं? नहीं बेटा, देखो हमने जन्म लिया है कर्मों के कारण, कर्मों के साथ जिम्मेवारियां भी जुड़ी हुई हैं। अब वो जिम्मेवारियां भी पूरी करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी। अगर सच्चे दिल से हमारे अंदर वो भावना होगी, अपने आप मालिक आगे जाके मौका दे देगा। मगर हमने जिम्मेवारियों से नहीं भागना बेटा। अगर जिम्मेवारी पूरी करेंगे, अपने आप मालिक ऐसा मौका बना देगा कि हम सेवा भी कर सकें। बाबा जी, सत्संग घर की सेवा आप बहुत जुनून से करवाते हो और इतनी बख्शते हो कि मुक्ति नहीं है, बट ये है कि उसमें अब बैलेंस नहीं बन पाता दुनियादारी में, तो कैसे किया जाए? साथ वाले जो हैं वो नाराज हो जाते हैं। नहीं बेटा,
बैलेंस रखेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे बेटा। बैलेंस खराब होगा, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे बेटा। जिंदगी के हर एक पहलू में बैलेंस चाहिए ना। सो बैलेंस तो बहुत जरूरी है बेटा। लेकिन बाबा जी हम अगर कोई भी काम की शिद्दत से करते हैं, जुनून से करते हैं, तो चीजें कुछ तो पीछे छूटेंगी ही। बेटा सेवा में लग गए और जिम्मेवारियां नहीं निभाई तो कर्म तो खत्म नहीं होंगे ना। सो जो भी करना है जुनून से करना है, चाहे सेवा है चाहे जिम्मेवारियों को निभाना है, हर एक चीज को जो भी चीज करते हैं अच्छी तरह करनी चाहिए और अच्छी तरह निभानी चाहिए। सिर्फ एक चीज नहीं, सभी चीजें। बाबा जी मेरा प्रश्न है कि हमारे आसपास जो है ऐसी रूहें होती हैं जो आपसे बहुत प्यार करती हैं, मतलब कि दुनियादारी में फंस के जो है वो आपका सत्संग और आपका भजन सिमरन जो है कर नहीं पाते हैं, तो उनके लिए बाबा जी क्या संदेश होगा आपका? क्यों नहीं कर पाते? हमने कभी कहा है कि आज हम नहा नहीं सकते, आज हम रोटी नहीं खा सकते, आज हम सो नहीं सकते? अगर इन सब चीजों के लिए वक़्त निकाल सकते हैं तो मालिक के लिए क्यों नहीं निकाल सकते बेटा? हमारे लिए ये दुनियावी तौर तरीके ज्यादा जरूरी हो गई हैं और मालिक का शुक्र करना हम भूल गए हैं बेटा। करने कराने वाला तो मालिक है ना। सब सुख दाता राम है, दूसर ना ही कोई। अपनी जरूरत के लिए करना है बेटा। सवाल है कि कभी कभी मैं जो फील करती हूँ वो सिर्फ कोइंसिडेंस होता है। बेटा कोइंसिडेंस क्या होता है तो किस्मत में जो लिखा बेटा। किस्मत हमारे कर्मों के ऊपर बनी है। हम कभी कोइंसिडेंस कर लेते हैं, कभी उसको मिरेकल बना लेंगे, कभी कुछ उसको नाम दे देंगे। होता था सब कुछ मालिक के हुक्म के साथ है बेटा। सो हमने तो उसके हुक्म में रहना है और उसका हर एक वक्त शुक्र करना है। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। बेटा दान पुण्य ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਬਣਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਹੈ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਪਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਲਕਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੀਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਜਪ ਤਪ ਜੇਤੇ ਸਭ ਉਪਰ ਨਾਮ, ਹਰ ਹਰ ਰਸਨਾ ਜੋ ਜਪੇ ਤਿਸ ਪੂਰਨ ਕਾਮ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਤਪੋ ਰਾਜ ਰਾਜੋ ਨਰਕ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਚੰਗੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਨਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੀਰਾਬਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੋਹ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਫੇਸ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕੋਈ ਮੀਰਾਬਾਈ ਬਣ ਜੂ ਜਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹ ਅਨਾਇਤ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਭਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਬੇਟਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜੇ ਮਾਲਿਕ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਮਾਲਿਕ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੂਗਾ। ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਊਗਾ ਬੇਟਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ।